Hey Tan fam, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing really well, and I know COVID third wave has struck again, and I know a lot of you are at home, but it's need of the hour, so I hope you mask up, stay safe, and wishing you all just good health. And anyways, ये look काफ़ी लोगों ने Instagram पे request किया. A lot of you guys liked it on my reel as well, and I had to shoot a tutorial for you guys. So क्या है? I've tried to keep it short and concise so that you guys can understand without any too much information. Sometimes सर के ऊपर से चला जाता है and you get confused. So I'm just going to keep it very crisp and precise so that you guys can understand. If you have any doubts, let me know in the comment section below. I will definitely clarify it. So without wasting any time, let's get started. So I'm going to start off by doing my brows as usual. I generally do my eye makeup first, and I'm going to be using the Lakme brow pencil to just quickly fill in my brows like so. I'm just going to lightly fill it in. I'm not going to make it blocky, and just quickly finish that off. Yeah, that's it. Now moving on, a lot of you guys know that I always prefer concealing my eyelids before applying any eyeshadows. I'm going to quickly do that. I'm going to take the L'Oreal concealer in the shade Almond and just quickly blend it out with the beauty blender. That will work brilliantly as a canvas for my eyeshadow. So just quickly blend that out. You don't have to be perfect about it. Just अच्छे से उसको blend out कर दो and एक smooth canvas आ जाना चाहिए. So for any smoky eye look, generally I always prefer creating a base. So I'm going to be taking the Sugar Cosmetics का काजल in the shade Back to Black, which will work as a base for my black eyeshadow. थोड़ा उससे क्या होता है ना कि smoky eye बहुत intense आता है, and having an intense smoky eye look is always amazing. So I've applied one side पे ही. Make sure that you apply it पहले and then only smudge it out, नहीं तो quickly dry हो जाएगा. And just quickly smudge this out. Smudge it out till your natural crease line. उससे ज़्यादा ऊपर लेके मत जाना, नहीं तो it becomes very shabby. So just make sure you're sticking within your crease line, and then बाकी हम black eyeshadow के साथ हम blend out कर देंगे. Yeah, that's about it. Now that my eyes are ready, I need to layer this kajal. The जो काजल हमने smudge किया उसको हम एक black eyeshadow लेके उसको हम set करेंगे. Now you can use any palette that you like. I'm using a Makeup Revolution palette. सारे product details नीचे रहेंगे. Black eyeshadow किसी fluffy brush में लेके, ये pack का brush है, and I will just dab on it ऐसे, just so that since हमने एक creamy product लगाया है उसके ऊपर अगर हम थोड़ा पाउडर से सेट करेंगे ना तो वो क्रीज आउट नहीं होगा. तो हम उसको बस ब्लैक आई शेडो से सेट करेंगे, और जो एजेस है ना हम उसको अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे. जस्ट मेक श्योर यू नॉट ब्लेंडिंग इट एकदम ऊपर तक, जस्ट अ सॉफ्ट ब्लेंड, और हाथ हल्का रखो जब आप ब्लेंड कर रहे हो. ट्रस्ट मी गाइज, ये लिटरली 2 मिनट लगता है ये आई लुक करने को. इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स एक्चुअली नॉट. सो यू जस्ट हैव टू क्विकली ब्लेंड इट आउट लाइक सो, हल्के हाथ से, एंड यू आर एक्चुअली डन. दिस इज ऑलमोस्ट डन. आई एम वेरी हैप्पी विद द ब्लेंड, एंड दैट्स इट. Now it's time for us to apply the glitter, and I'm going to be using Indra Cosmetics ka glitter. Now they are a page on Instagram. They sell beautiful glitters. So I'm going to link their Instagram page down below for you. You have to just send them a DM and they will be able to, process your order. They'll send you the shade ranges and everything. And I'm going to be using the Makeup Studio ka glitter glue. You can use anything that you like. This again I got off of an Instagram page. I got it from Lazy Cosmo Hub. That also I will link it down below for you guys. So I'm just going to take the glue like so, and I'm just going to apply a quick thin layer on top of my eye. You can use a flat brush to apply. I thought directly apply it from the brush only like so. Then you need to quickly take a flat brush. Any flat brush will do, and take a flat brush like so, and I'm going to dip it in the glitter, and I'm going to quickly start dabbing it. Now I don't have any worries about the fallout because already I haven't done my base makeup yet, so that is a very big advantage.
तो अगर वो ग्लिटर फेस पे गिरेगा भी, हम यू नो वी कैन क्लीन इट ऑफ. सो जस्ट गोना क्विकली डैब द ग्लिटर लाइक सो. या दैट्स इट. ज़्यादा नहीं लगाना है. इफ़ यू फील लाइक योर ग्लू हैज़ ड्राइड आउट, थोड़ा सा यू कैन गो बैक विद द मेकअप स्टूडियो ग्लू एंड पुट इट अगेन. सो जैसे ही आप ग्लू लगाते हो ना, इमीडिएटली स्टार्ट पुटिंग द ग्लिटर, नहीं तो वो ड्राई आउट हो जाएगा एंड देन उसका इफेक्ट फिर नहीं रहेगा एंड देन योर ग्लिटर विल नॉट स्टिक एंड देन दैट्स द प्रॉब्लम दैट कम्स. एंड दैट्स अबाउट इट यू गाइज. दिस इज लिटरली वॉट इट इज़. दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट दिस स्मोकी आई लुक एंड इट गिव्स अ वेरी ग्लॉसी फिनिश जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. And I'll be doing the lower lash line only after I finish my base makeup. And abhi I'm just going to quickly put my lashes on. I'm using the pack lashes in the shade pack lashes in the style M79 and everything is linked नीचे. And also if you guys want to know a tutorial की falsies कैसे लगाते हैं, वो भी एक मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो मैं आप लोगों के लिए इधर कहीं लिंक कर दूंगी. So do go and check it out. So I'll just put my lashes and I'll be right back. So I've already applied the false lashes and this is how the look looks. Falsies change the game. Lashes लगाओगे तो एकदम look change हो जाता है. So I'm going to be taking my mascara right now. I'm going to be taking a Forever 52 mascara and I will be joining the two lashes together. हो जाए like so. बस. And we are done. Now I'm just going to सॉरी गाइज, मेरा थोड़ा फॉल्सीज आज लूज है, पता नहीं क्यों. हाँ. सो नाउ जस्ट टेक अ फ्लफी ब्रश एंड अगर आपके फेस पे कोई ग्लिटर है ना तो वो निकल जाएगा. एंड इफ इट्स स्टिल नॉट कमिंग आउट देन प्रॉबेबली यू शुड टेक अ टेप एंड थोड़ा सा ना स्टिक करके निकाल दो. दैट्स जनरली द बेस्ट वे टू रिमूव ग्लिटर ऑफ योर फेस. बट मेरा एक फ्लफी ब्रश से निकल ही रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड देन वी आर ऑल नाउ रेडी टू स्टार्ट द बेस. So I'm going to be using this Nivea ka soft moisturizer. This is only for $90 and it works so well for dry skin. It's super thick and creamy and I think it's perfect for an application before you start your makeup. ये सिर्फ dry skin वालों के लिए अच्छा है. Make sure you use moisturizer according to your skin type and we're actually really good to go for primer up. So I'm going to be taking the Color Baka Flawless Finish Primer. This primer is really good. मैंने already थोड़ा अपने face पे apply किया हुआ है. And I'm just going to nicely spread the primer all over my face. Primer से ना आपका base थोड़ा और flawless आता है because it works as a very good layer between your foundation and your natural skin and it gives a very airbrushed natural finish and a very smooth finish to your फाउंडेशन रूटीन. मेक श्योर दैट जब भी आप लोग कुछ फाउंडेशन या प्राइमर लगाते हो थोड़ा बहुत कभी कभार लैशेज में लग जाता है तो बी केयरफुल. मेरे पिछले शॉट में था तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर रिमूविंग इट. इट्स नॉट गोना कॉज एनी डैमेज बट नो प्रॉब्लम. एनीवेज वी आर गोना टेक LA Pro Girl का ऑरेंज कलर करेक्टर एंड आई एम गोना अप्लाई इट इन माई अंडर आइज बिकॉज वहाँ पे पिगमेंटेशन है मुझे. आई हैव इट अराउंड द माउथ एरिया and a little bit between my forehead because I had a mark there. And I'm going to quickly blend this out using a beauty blender. So now once we're done with the color corrector, it's time to use a foundation. I'm going to be taking K Beauty ka foundation. It's in the shade 155 tan and this fits into my skin so effortlessly you guys. अभी आप लोग को देखोगे ना आप लोगों को पता चल जाएगा. It fits in so beautifully into my skin. I've just taken a few pumps on my face and it just melts into my skin so beautifully. It's one of my current favorite foundations also and I'm just gonna quickly blend that out. And ये ना very good for drying skin. It's so hydrating. I think the name of the foundation is also K Beauty Hydrating Foundation if I'm not wrong.
बट एनी वेज द पॉइंट इज़ कि ये ना ड्राई स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है. सो just make sure कि you guys are using this. It's really good if you're someone who has dry skin. आप लोग आँख बंद करके ये फाउंडेशन ले सकते हो. मुझे ये इतना पसंद है. So yeah. Now it's time for us to highlight the main points of our face. So मैं वही L'Oreal concealer जो मैंने eyelids के लिए यूज़ किया था वही मैं अंडर आइज में लगा रही हूँ ऐसे. थोड़ा यहाँ पे and just यहाँ पे and then take a beauty blender and quickly blend it out. Now that I'm done with applying the concealer and the foundation, I'm done with using all cream or liquid based products. So I'm going to be now setting my face. I'm going to take the Pakka setting powder. It's in the shade 02 and I'm going to just quickly set my under eyes and set my full face. Just make sure that you're using little product. ज़्यादा मत करना नहीं तो वो एक white cast आ जाता है which we don't want. So let's just quickly set our under eyes. Just make sure to brush off the excess ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट ना हो. ज़्यादा प्रोडक्ट डालोगे तो वो ज़्यादा क्रीज होगा और केकी लगेगा which we don't want. And बस थोड़ा सा पाउडर लेके just set the rest of your face. Don't forget to set your neck as well. That is also important. वहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट लगाया है. So now it's time to add some warmth back to the face. So I'm going to be using the Physicians Formula का bronzer in the shade Sun Kissed and I'm going to take a brush, angular brush like so. Again सारे brushes मेरे Bailey के brushes हैं, तो you can get it from the same Lazy Cosmo hub page if you want. I've already linked them for you नीचे, so you can check it out. And just quickly do it below your jawline to get a chiseled look. Obviously the natural contour line ऐसे. I like the fact that ये ज़्यादा dark नहीं है. I always prefer bronzing over contouring, but सबकी अपनी personal choice है. Make sure that you are also applying the bronzer into your hairline ताकि it's a very seamless transition like so. Same brush को लेके I'll just make it squeeze the brush and just quickly do off my nose also. I don't do a very sharp contour, so इतना काफ़ी है. So अभी blush के लिए मैं एक Color Bar का blush ले रही हूँ. It's in the shade Coral Bliss. It's such a beautiful shade. So beautiful. I've actually been loving it lately. एक fluffy brush लूँगी and I'll just take a little bit, dab off the excess and just apply it. You guys can see how beautiful this shade is. It actually matches the color of my t-shirt that I'm wearing. Just quickly. ज़्यादा heavy नहीं करूँगी. Buildable है ये, तो just make sure you're not applying too much. नहीं तो बहुत funny लगता है when you apply too much blush also. So just keep a balance. A little bit on the nose and chin, and I think you are good to go. Now it's time to apply highlighter, which is the most favorite part for me. I'm going to be taking the Pakka highlighter in the shade Raw Silk. It's a newly launched highlighter. Guys, it's super creamy and so beautiful. So I'm just going to apply it on my obviously cheekbone area. मैं अपने brow bone में भी apply करूँगी और inner corner में भी करूँगी. So let's just quickly do it. You guys can see how beautiful it is. Can you see the shine and the glow? It's so stunning. I'll have to check कि Nykaa पे आया है या नहीं. Otherwise you can collect it. You can purchase it from the Pak website.
so good, it's so beautiful. One of my favorite highlighters abhi. I'm going to take a pencil brush like so and just apply it on my brow bone like so. नाउ आप या तो अपने लोअर लैशेस को ऐसे ही छोड़ सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू कंप्लीट द लुक देन आई एम गोइंग टू गो बैक टू द शुगर कॉस्मेटिक्स का काजल एंड आउटलाइन माय लोअर लैश लाइन. और थोड़ा सा ना मैं एक प्रिसाइज ब्रश लेके, अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू नो व्हाट प्रिसाइज ब्रश आई यूज़. लाइक आई सेड, ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, एक पैक का पूरा ब्रश किट लिया था मैंने एंड वो ये वाला ब्रश उसी में आया था. तो आई लिंक द ब्रश किट फॉर यू गाइज नीचे एंड आई एम जस्ट गोना क्विकली स्मच दिस आउट. ऐसे. नाउ आई जस्ट गो बैक टू अ ब्लैक आई शेडो फ्रॉम द सेम पैलेट जो मैंने लिड पे यूज़ किया एंड मैं जस्ट लोअर लैश लाइन में ना उसको थोड़ा सा आउटलाइन दे दूँगी ताकि जस्ट वो कंप्लीट हो जाए. बिकॉज आई यूज्ड अ क्रीम प्रोडक्ट ना, आई जस्ट वांटेड टू सेट. तो थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लेके मैं उसको सेट कर दूँगी. सो इट्स टाइम टू जस्ट फिनिश ऑफ द लिप्स एंड सेट द फेस. तो अभी आई एम गोइंग टू बी टेकिंग नायका का लक्स कलेक्शन है एक, एंड इसका शेड अवोकाडो टोस्ट है जो मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है. मेरे रील्स में ज़्यादातर मैं यही शेड यूज़ करती हूँ, मुझे इतना पसंद है. तो आई एम जस्ट गोना क्विकली अप्लाई इट ऑल ओवर माई लिप्स एंड अगर आपको लिप आउटलाइन करना है तो आप कर सकते हो, मैं नहीं करती हूँ. इफ़ यू गाइज हैव बीन फॉलोइंग मी यू नो आई डोंट आउटलाइन माई लिप्स. आई जस्ट फाइंड इट टू टीडियस टू डू इट, बट इट्स इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको करना है आप कर सकते हो एक न्यूड पेंसिल लेके. बट आई एम जस्ट गोना क्विकली अप्लाई दिस ऑल ओवर माई लिप्स. इट्स मैटिफाइंग एंड super beautiful color it is. ये इतना versatile लिप शेड है ना, आप लोग ये एवरीडे भी लगा सकते हो या फिर इफ़ यू वांट टू डू इट फॉर अ पार्टी यू कैन जस्ट अप्लाई दिस एंड जस्ट अप्लाई लिटिल बिट ऑफ ग्लॉस. वो लुक इतना एम्प अप होता है ना, आई कांट टेल यू. सो those of you who want to leave it at a matte finish you can do that. It will look something like this. I'm going to add a bit of gloss and I'm going to be using the MAC ka gloss. My mom got this for me. This is in the shade Girls Delight. She had purchased it from the store. It's a very beautiful lip gloss. I'll just show you the application. It is so beautiful. One of my most favorite glosses. Obviously थोड़ा expensive है but totally worth the money. But I'm going to try looking for a dupe for you guys so that you guys can purchase it without having to spend so much money. And yeah, this is how it's looking. But what a beautiful lip gloss. I love this lip gloss. And you guys know, those of you who are following me on Instagram also know that I'm a gloss person. I love lip glosses, especially nude lips और lip gloss. तो combination मुझे बहुत पसंद है. तो anyways, अब हम Wet n Wild का ना setting spray लेंगे. We are gonna finally set the entire face and I'm just gonna shake the bottle थोड़ा distance पे रख के and just spray it all over. Just fan yourself ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए and मेकअप अच्छे से बैठ जाए स्किन पे, which is important. So we are done with the final look. This is how the look looks, you guys. I did this for an Instagram reel and a lot of you loved the eye look, you loved the reel. Thank you so much for the love and thank you for sticking around. It means so much to me and I hope you enjoyed this tutorial. I tried to be a little quick and concise. Let me know if you liked that and I will see you guys next time. Bye.